प्रश्न संख्या 2। मुस्लिम कानून के स्कूलों और उपस्कूलों की व्याख्या करें। मुस्लिम कानून की दो प्रमुख शाखाएं हैं, सुन्नी और शिया। पैगंबर मोहम्मद इस्लामी समुदाय के सर्वमान्य नेता थे। वे कानून के साथ साथ पूरे मुस्लिम समुदाय के मुख्य प्रशासक भी थे। उनके निधन के बाद सबसे तात्कालिक समस्या उनके उत्तराधिकारी को चुनने की थी। पैगंबर के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर मतभेदों के कारण दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, अर्थात सुन्नी और शिया। इस प्रकार इस्लाम का विभाजन केवल राजनीतिक प्रश्नों के कारण हुआ, लेकिन बाद में ये कानूनी सिद्धांतों के पृथक्करण का कारण भी बना। इन दो संप्रदायों ने मुस्लिम कानून के दो प्रमुख स्कूल बनाए। बाद में सुन्नियों में कई उप संप्रदाय बन गए, जिनमें से प्रत्येक सुन्नी कानून का एक अलग स्कूल बन गया। शियाओं में भी इसी तरह का विभाजन हुआ। नीचे दिया गया चार्ट मुस्लिम कानून के विभिन्न स्कूलों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सुन्नी स्कूल। सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूल बने: हनफी, मालिकी, शाफई, हनबली। शिया स्कूल। शिया संप्रदाय के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूल बने: इथना, अशरिया या इमामिया। इसमें आगे वर्गीकरण है: अखबारी और उसूली। इस्माइली। इसमें आगे विभाजन है: खोजा और बोहरा। जैदिया। मुज्जिला संप्रदाय। मुस्लिम समाज का ये हिस्सा उत्तराधिकारी के चयन के लिए चुनाव की वकालत करता था, क्योंकि पैगंबर ने स्वयं चुनाव का सुझाव दिया था। पैगंबर के सुझावों या कहावतों को उनकी परंपराएं सुन्नत कहा जाता है। इस समूह ने पैगंबर की प्रथाओं पर भरोसा किया। तदनुसार एक चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें अबू बकर को प्रथम खलीफा चुना गया। इस समूह ने अपने नेता अबू बकर के साथ इस्लाम का सुन्नी संप्रदाय बनाया। उन्होंने खुद को अहल-ए-सुन्नत व जमात नाम दिया, जिसका अर्थ है परंपरा और सभा के लोग। इन्हें आमतौर पर सुन्नी के नाम से जाना जाता है। शिया संप्रदाय। फिर भी कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो पैगंबर के उत्तराधिकारी के चयन के लिए चुनाव के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनकी मंशा थी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी संप्रदाय का आध्यात्मिक नेता होना चाहिए, जैसा कि पैगंबर स्वयं थे। उनका तर्क था कि ये गुण रक्त की श्रेष्ठता से आता है, इसलिए पैगंबर से रक्त संबंध रखने वाला या उनके परिवार से संबंधित व्यक्ति उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे योग्य माना जाना चाहिए। इस आधार पर पैगंबर के दामाद अली को इस समूह ने प्रथम इमाम के रूप में नामित किया। इस समूह ने बहुसंख्यकों से अलग होकर शिया नामक एक अलग संप्रदाय बनाया। इस प्रकार मुस्लिमों को शिया और सुन्नी दो संप्रदायों में बांटने वाला विभाजन पैगंबर के उत्तराधिकारी को चुनने के तरीके पर मतभेद के कारण हुआ। इन दो समूहों ने मुस्लिम कानून की दो प्रमुख स्कूल बनाए। बाद में सुन्नियों में कई उपसंप्रदाय बने, जिनमें से प्रत्येक सुन्नी कानून का एक अलग स्कूल बन गया। शियाओं में भी इसी तरह का विभाजन हुआ। हनफी स्कूल। ये सुन्नी मुस्लिमों का स्कूल अपने संस्थापक अबू हनीफा के नाम पर है और ये मुस्लिम कानून का सबसे लोकप्रिय स्कूल है। अबू हनीफा अपने समय के एक प्रख्यात विद्वान थे और अपने तकनीकी कानूनी विचारों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। इस स्कूल का गृह क्षेत्र इराक था। मालिकी स्कूल 713 से 795 ईस्वी सन। इस स्कूल की स्थापना मदीना के मालिक इब्न अनस ने की थी। वे एक महान विद्वान थे और परंपरा के विशेषज्ञ माने जाते थे। मालिकियों के अनुसार नए नियम यथासंभव केवल परंपराओं से प्राप्त किए जाने चाहिए। यदि ये संभव न हो तभी कियास और इजमा पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये स्कूल केवल मदीना में रहने वाले विद्वानों के इजमा को मान्यता देता है। शाफई स्कूल 767 से 820 ईस्वी सन। इस स्कूल के संस्थापक इदरीस अश शाफई थे, जो एक प्रख्यात विद्वान और इस्लामी न्यायशास्त्र के विशेषज्ञ थे।
वे मालिक इब्न अनस के शिष्य थे और पवित्र पैगंबर से संबंधित थे। उन्होंने बगदाद और काहिरा में अपने सिद्धांत विकसित किए। इस स्कूल ने भी पैगंबर की परंपराओं पर भरोसा किया। उनकी परंपराओं पर निर्भरता मालिकियों की तुलना में अधिक गहन और आलोचनात्मक थी। हनबली स्कूल 780 से 855 ईस्वी सन। सुन्नी संप्रदाय का चौथा और अंतिम स्कूल इब्न हनबल द्वारा स्थापित किया गया। उनकी विशेषता ये थी कि वे पैगंबर की परंपराओं का कठोरता से पालन करते थे। इसलिए कहा जाता है कि हनबल एक परंपरावादी थे, न कि न्यायशास्त्री। उन्होंने परंपराओं पर इतना अधिक भरोसा किया कि कानून के अन्य स्रोत जैसे इजमा और कियास को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसूल के सिद्धांत को परिपूर्ण किया। शिया स्कूल। शिया स्कूल का उद्गम इमाम जाफर अस सादिक से हुआ, जो इमामों में छठे इमाम थे। शिया पैगंबर की परंपराओं को स्वीकार नहीं करते। जैसा कि ज्ञात है, शिया समुदाय ने अली को प्रथम इमाम के रूप में स्वीकार किया, जो समुदाय का सांसारिक और आध्यात्मिक नेता था। अली की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र हसन और हुसैन क्रमशः दूसरे और तीसरे इमाम बने। हुसैन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जैन उल आबदीन चौथे इमाम बने। इस चरण तक शिया समुदाय एकजुट रहा, लेकिन इसके बाद इस संप्रदाय में विभाजन और उपविभाजन हुए। इतना अशरिया स्कूल, इसे इमामिया स्कूल भी कहा जाता है। अधिकांश शिया इतना अशरिया है। इस स्कूल के अनुयायी मानते हैं कि अली से लेकर 12 इमाम हुए, जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। इमाम से प्राप्त हर चीज को कानून माना जाता है। ये माना जाता है कि 12वां इमाम, जो बचपन में लापता हो गया था, भविष्य में पुनः प्रकट होगा। इस स्कूल की विशेषता यह है कि ये मुस्लिम दुनिया का एकमात्र स्कूल है जो मुता अस्थायी विवाह को मान्यता देता है। इस स्कूल को 2 उपसंप्रदायों में और विभाजित किया गया है। अखबारी, ये बहुत रूढ़िवादी है क्योंकि वे इमामों की परंपराओं का कठोरता से पालन करते हैं। 2 उसूली, ये कुरान के ग्रंथों की व्याख्या दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के संदर्भ में करते हैं। इतना अशरिया ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। शरीउल इस्लाम इस स्कूल की एक प्रामाणिक पुस्तक है। इस्माइली स्कूल, जाफर सादिक ने अपने सबसे बड़े बेटे इस्माइल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इसलिए शियाओं का बहुमत उन्हें अपने इमाम के रूप में स्वीकार नहीं करता था। लेकिन कुछ शिया, हालांकि अल्पसंख्यक, मानते थे कि इस्माइल ने एक गुप्त इमामों की श्रृंखला उत्पन्न हुई, जो लगातार रूढ़िवादी इस्लाम के कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करने के अवसर की तलाश में थे। इस्माइली इसलिए मानते हैं कि इस्माइल के बाद के इमाम अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियां छिपा रखी है। भारत में वे 2 मुख्य समूहों में शामिल हैं, खोजा और बोहरा। खोजा मूल रूप से हिंदू है, बोहरा भी इस्माइली है, जो फातिमिद शासन के दौरान अन्य समूहों से अलग हो गए। जैदी स्कूल, इस स्कूल के संस्थापक जैद थे, जो चौथे इमाम के पुत्रों में से एक थे। जैदी शिया मुस्लिमों के सामान्य समूह से अलग होने वाले पहले थे। इस स्कूल की एक खासियत यह है कि इसके सिद्धांतों में सुन्नी सिद्धांतों का भी समावेश है। इस स्कूल के अनुयायी भारत में नहीं पाए जाते, ये मुख्य रूप से यमन में है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। The 2 sects of Muslim law are Sunni and Shia. The Prophet Muhammad was the universally head of Islamic Commonwealth. He was absolute authority on law as well as chief administrator of the whole body of Muslims. After his death, the immediate problem was to find out his successor. The conflicting opinions over the selection of Prophet's successor led to the division of 2 sects, that is Sunnis and the Shias. Therefore, Islam was
dividing with political questions only, but the subsequently it resulted in the separation of legal principles as well. These two sects formed two major schools of Muslim law. Later, the Sunnis further split into several subsects, each of these sects representing a distinct school of Sunni law. There was a similar split also among the Shias. The chart below gives a clear picture of different schools of Muslim law. Sunni schools. Schools which are formed under Sunni sect are as follows: Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. Shia schools. Schools which are formed under Shia sect are as follows: Ithna, Ashriya or Imamiya. Further classification is as Akhbaris and Usuli. Ismailiyas further divided into Khoja Bohra, Zaydiyas. Mu'tazila sect. This section of Muslim society pleaded for election as a method of finding out the successor of Prophet, because the Prophet himself had suggested election. The Prophet's suggestions or sayings are called his traditions, that is Sunnat. They relied on the practices of the Prophet. According, an election was held in which Abu Bakr was elected as the first caliph. This group of Muslims with its leader Abu Bakr formed the Sunni sect of Islam. They assumed the name Ahli Sunnat wal Jamaat, which means people of the tradition and assembly. They are popularly known as Sunnis. Shia sect. Yet they were a group of Muslims that did not agree to the principles of election, headship of the Prophet rather than its administrative control. Their intention was that the Prophet's successor should be a spiritual leader of the community as Prophet himself was. They argued that this quality comes through the nobility of blood. Therefore, a person who is related to Prophet through blood or belongs to his family should be the most regarded as the most competent person to succeed him. Therefore, Ali, who was the son-in-law of the Prophet, was nominated as the first Imam by this group themselves from the majority and constituted a separate sect called Shia. Therefore, we see that split which divides the Muslims into two sects, Shia and Sunni, was due to the difference of opinion among the Muslims as to how to find the successor of the Prophet. These two groups formed the two major schools of Muslim law. Later, the Sunnis further split into several subsects in themselves, each sect representing a distinct school of Sunni law. There was a similar split in the Shias. The Hanafi school. This school of the Sunni Muslims is named after its founder Abu Hanifa and is the most popular school of Muslim law. Abu Hanifa was an eminent scholar of his time and was widely known for his technical legal thoughts. The home of this school was Iraq later. The Maliki school, 713 to 795 AD. This school was established by Malik ibn Anas of Medina. He was a great scholar and is regarded to be an authority on the tradition. According to Malikis, as far as possible, the new rules should be obtained exclusively from the traditions. If it is not possible, then only Oriyas and Ijma may be taken into consideration. But this school recognizes Ijma of only such source who lived in
Medina. The Shafi School 767 to 820 AD. The founder of the school is Idris Ash Shafi. He was an eminent scholar and Islamic jurisprudence. He was a pupil of Malik ibn Anas and was related to the Holy Prophet. He developed his doctrine at Baghdad and Cairo. This school of thought also relied upon the traditions of Prophet. His reliance on traditions was critical and much more than Maliki's. The Hanbali school 780 to 855 AD, the fourth and the last school of the Sunni sect, were established by Ibn Hanbal. His peculiar feature was that he rigidly adhered to the traditions of the Prophet. It is therefore said that Hanbal was a traditionalist rather than a jurist. He relied so much upon the traditions that other sources of law, that is, Ijma and Oriyas, were neglected by him. He perfected the doctrine of Usul, Shia schools. The Shia school has its origin to Imam Jafar as Sadiq. He is the sixth Imam of the Imams. The Shias do not accept to the traditions of Prophet. As known, Ali was the first Imam by the Shia community. He was accepted temporal and spiritual head of the community. After the death of Ali, his two sons Hassan and Hussein became the second and the third Imam. After Hussein's death, his son Zain ul Abdin succeeded as the fourth Imam. Up to this stage, the Shia community remained united, but afterwards there has been divisions and subdivisions of this sect. The Ithna Ashariya school. This school is also called as Imamiya school. Majority of Shias are Ithna Ashariya. The followers of this school believe that from Ali there had been 12 Imams who possessed spiritual powers. Everything that comes from the Imam is taken to be a school. It is believed that the 12th Imam, who disappeared when he was still a child, would reappear in future. The characteristic feature of this school is that this is the only school in Muslim world which recognizes muta or temporary marriage. This school is further divided into two subsects, Akhbari and Usuli Akhbaris. They are very orthodox because they follow rigidly the traditions of Imams. Usulis, on the other hand, interpret the texts of Quran with reference to practical problems of day-to-day life. The Ithna Sharias are found in Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan and India. Shari-ul Islam is an authoritative book of the school, Ismailiya school. Jafar Sadiq disinherited his eldest son Ismail. Their majority of Shias therefore did not accept him as their Imam, but there were some Shias, although in minority. They believed that from him Ismail descended a series of therefore did not accept him as their Imam, but there were some Shias, although in minority. They believed that from him Ismail descended a series of concealed Imams whose secret conversations were constantly on the watch for a chance of striking at some weak point in the large ill-commented empire of Orthodox Islam. The Ismailiyas therefore hold that Imams subsequent
to Ismail are still alive, but they have concealed their exercise. In India, they consist of two main groups, Khojas and Boras. Khojas are originally Hindus. Boras are also Ismailas. They separated from the other groups during the Fatimid regime. JHS School. The founder of the school is Zaid, one of the sons of the fourth Imams. The Zaydis were the first to separate from the general body of Shia Muslims. One of the peculiar features of this school is that its doctrines incorporate some of the Sunni principles as well. The followers of the school are not found in India, they are mostly in Yemen.